Welcome and good morning to everyone. And it's so lovely to have such wonderful people first thing in the morning, Yes. with me and joining this new journey on discovering the magic for our dream life. Yeah. Yeah, so it's so wonderful. And, I'm always excited when I'm starting a new session. It's because I've done it many times, but every time I start, it is something new. तो कहते हैं ना जो लोग होते हैं उनका स्पेस होता है जिस तरह का आप ऑरा क्रिएट करते हैं जिस तरह की आप वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और जिस तरह के आप होते हैं मैं वैसे ही शो अप करूंगी तो मेरी जर्नी आपकी जर्नी इट्स गोइंग टू बी टुगेदर टुडे एंड वी विल बी स्टार्टिंग दिस wonderful book reading which is Magic by Rhonda and it's a best-selling book for many years now and it's been translated in many languages और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन ये बुक दुनिया भर में ला चुकी है सो मैंने ये जर्नी शुरू करी ऑफ ग्रुप रीडिंग ऑफ दिस बुक इन द मंथ ऑफ नवंबर वैसे तो लॉकडाउन में शुरू हो गया था हमारी फ्रेंड्स ने हमने कुछ लोगों ने मिलकर शुरू किया था which is still going on very strongly and lots of people are doing it right now so but I was not able to start it for some reason or the other so finally I took the plunge and started it in November and this is the fourth session I'm doing and I don't have words to express how enriching this has been for me like how much my life has transformed since the time I started doing this group reading of this magical book called The Magic. So इसीलिए मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ते जाएं और इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करें ताकि सबकी जिंदगियां मैजिक से और जादू से भर जाए सो आज का सेशन हम अभी शुरू करेंगे इससे पहले वी स्टिल हैव अराउंड 7 minutes एंड थोड़ा से रूल सेट कर देती हूँ क्योंकि हर गेम के रूल होते हैं तो बिना रूल्स के गेम तो खेला ही नहीं जा सकता सो हमारे रूल्स बहुत सिंपल से हैं एंड नंबर 1 जब तक आप बोल ना रहे हो प्लीज म्यूटेड रहे if the person is reading only that person should be unmuted and rest all should be on mute but you all should read the book alongside because जितना आप पढ़ेंगे सुनेंगे और देखेंगे उस चीज को उतना ज्यादा आप उसको इम्बाइब कर पाएंगे उतना ज्यादा वो आपकी जिंदगी में उतर पाएगा उसका इम्पैक्ट उतना ही होता है so this is the only thing I wanted to say and anything you want to ask or something like आप chat box में लिख सकते हैं and we will try to answer all of these all the questions you have or any unclarity you have about the session and I'm going to be sharing the recording in the group every day so that by any chance in case somebody misses it should not miss out on the practice of that day क्योंकि इस जर्नी में हम 28 डेज की जो जर्नी जो ये 28 डेज की बुक है इस जर्नी में अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो एक ही की है द ओनली चाबी टू दिस मैजिकल वर्ल्ड इज प्रैक्टिस और उसके लिए हम लोगों ने एक इस सेशन में एक नया कुछ शुरू किया है which for which Pooran will be telling you a little bit. So Pooran is my co-host and he's a wonderful human being and an amazing friend. One person I can always rely on anytime for my personal or professional, any kind of support. And he's my accountability partner for my health and for my, which I started my new career as a life coach. So he's my accountability partner for that also. And so he will be coming whenever he gets time because he's a very busy person these days. So, but he'll be joining us as and when he has the time. And today he'll be explaining to you what is that we are starting new in this session. So we are starting with the integrity MIS. तो होता क्या है मैंने पिछले 3 सेशंस में ये देखा है कि मुझे कुछ नहीं पता चलता कि कौन
अपने असाइनमेंट्स कर रहा है कि नहीं, और जब तक आप असाइनमेंट्स नहीं करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नहीं. So we have created an MIS in which we'll be sharing a form which you have to fill up every day. So I think I'll give it to Puran to explain it more in detail. So over to you, Puran. So you can take over and just explain. Are you there, Puran? Yeah, hi, good morning, everyone. Hi, Jagjit. Very warm good morning. Can you hear me? Yes, we can. Okay, so I'm also super excited to be part of this amazing group and this magical journey. And so, guys, I think if you all can hear me clearly, kindly put up on chat box hi, so I can come to know that all of you are able to hear me clearly, because very important. Thanks, Piyush. I got your hi. Thank you. Thanks, Pananya. Perfect. Okay, so it means you guys can hear me clearly. Darshanji, thank you so much. Thanks, Sushil. So जगजीत, बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था, तो मैं लास्ट की लाइन सुन पाया आपकी, जो आपने क्रिएट किया था कि वी विल बी sharing a Google form and we have created an MIS. Yeah. Can you recreate so that I'm on a sync with you, and then we'll go ahead? Yeah, so I was just explaining that, you know, the key to transformation, if we are in this journey, is practice. And Yeah. if you're not practicing it, you know, it's going to be like a बुद्धि विलास. आप सिर्फ knowledge लेके जाएंगे और उसको कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. To support you in that, so we have created this MIS in which we will be sharing a form every day. So you have to fill it up and submit by certain time. And so we will be monitoring whether you have been practicing the practices which are given in the book, and we will be sharing the reports every week so that you also know where you stand. And if you need to buckle up, you can always you know what to do. So Puran is just going to explain how we are going to do that. Yeah, Puran. Perfect. So as I can see, all the dining people are here, from Sushil to Suma, Rahul, Piyush. A movement matters. Mananya, Darshan, Bhagwan Das, Anjali, Atul. Strategic orator is also there as a co-host. Interesting. And you and me. So guys, as Jagjit has created, we all know, जैसे कि बुद्धि विलास जगजीत ने बात करी. So intention of creating this MIS is that you and me and everyone play this journey as a game, right? And when we play as a game, then we have a scoreboard. Okay, आप लोगों ने गेम खेला होगा, और गेम में सबसे ज्यादा मजा इसीलिए आता है कि गेम में एक स्कोर बोर्ड होता है, right? So here you will be getting a. So Puran, there is a I think there's some problem with the connection. In a way that every day you will be so in your WhatsApp group you will be getting a Google form, and it's a specialized Google form that has been created keeping in mind all the assignments from day one to the completion of this program. Okay, आपको सिर्फ क्या करना है, उस गूगल फॉर्म पे जाना है, आप उसमें क्लिक करेंगे, आपका नाम मेंशन होगा उसके अंदर में, आप यू विल जस्ट क्लिक ऑन योर नेम. Thereafter it will ask us few information regarding which day you are participating in. If like it's day 0, so you'll put the day 0, or day 1, day 2, day 3. After that it will lead to you that particular day's assignment. If it is day 0, then it will lead to you the assignment of that day, right? So then you need to just click on that assignment whether you have done or not done. So based on few parameters which I'll be explaining with you, it will be creating an MIS or an implementation score of the magic. And you will come to know every day out of 100 how much percentage you have achieved in the game. And that will help you, that will help you keep that how much you are progressing and how much you are implementing that. Okay, so there are 4 parameters in that. One of the parameter is that whether you have watched this recording of the program or you have been participating in the program. So like right now all the people are here in the program on Zoom with us.
So you need to put yes or you need to put no. So if you are yes, you will be getting 25% scoring for that day. Second important thing is, as you all know, once we are live with the speaker, and once we are live as a group, it has a very different energy, right? Can you put on chat box if you are aligned with me that when you are live with the people, once you're interacting and participating, it has a very different energy rather than when we watching the recording later on. Yeah, Piyush, absolutely, Deepak. So that's why there's a second question which will ask you. Thanks, Darsanji. Got that. Thanks, Sushil. Second question will ask you that at what time you have joined the session. Okay, as we recommended everyone to come 10 minutes before the session. It's 6:30 and we inviting you 6:20 a.m. so that once you are at 6:20 a.m. in the session, then you are comfortable, you can adjust, you can check the voice, you can check the tone, you will be alert, awake, you will fully hear in the program. You if you have any questions, it can be addressed. So you will be completely, mentally, and you'll be completely with your gadget and all those things in the program. And that's very, very important and critical for you to get best out of this program. So if you have logged in at 6:20 or before 6:20 for that particular day, you will be getting 25% of the score out of 100. Okay. So this is the way you will be covering 50%. Then the third question will be asked that whether you have done the assignments. So if you have done the assignments, in all the assignment, there's a critical assignment always, right? So if you have done it, if you mention it done or not done, if you done, you will get the 25% more marks. So then you will be leading in the program. Okay. So it's 75%. And the last question will be at what you have submitted. That's very, very important. कई बार दिन भर में इतना हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में ऑक्यूपाइड होते हैं, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे जॉब में हो. एंड कई बार जब हमने भी स्टार्ट किया था तो वो मैजिक रॉक मिस होता है या रॉक नहीं मिल रहा होता है, बोला तो होता है बेड के नीचे रखा है, पता कहीं कहीं और रखा है. सो then it will not provide you that much intensity in the program, right? So for that, will you make sure कि आप रात को at least 10 बजे से पहले submit करें अपने assignment. You just go through once and it reflect in your mind whether you have completed the assignment or not. So those people who will be filling the form for that particular day before 10 p.m. at night will be getting the last 25% of the marks. Okay. So this is the way you will be getting the 100% out of 100%. And it will be interesting to see. One second, Puran. Bijal, can you go on mute, please? There's a lot of disturbance from your end. Thank you. Yeah, Puran, you can continue. Thanks. So guys, this is the way out of the 4 parameters. This is very important. On those 4 parameters, you will be getting a score. And it will be interesting to see कि आप में से कितने लोग 100 में से 100 पाते हैं, 100 में से 75 पाते हैं. I'm sure आप सब लोग distinction से पास होंगे इस प्रोग्राम में और आने वाली इस जर्नी के अंदर. And looking forward to have amazing journey. Yeah. So that's going to be an interesting game. So now the question will come कि आप लोगों को कैसे दिखेगा? आपने फॉर्म तो फिल कर दिया है, right? How you'll come to know that आपका आज का स्कोर क्या रहा? Like next day you can see your score. So for that आपके साथ में एक Google Sheet का लिंक दिया जाएगा, and that in that Google Sheet the name will come, and for that particular days these 4 questions, how much you score it will come, and the total will come. So you can see कि आपकी progress क्या है. Okay guys. Not only this, Jagjit, इतने से तो काम नहीं बनेगा, right? So yeah. So for that, we will be doing a few more interesting things every day. Every day you will be getting, shot of tuck tuck. Koi hai, it's a kind of reminder, or it's a kind of just come on, buckle up, guys. You'll be getting 2 messages every day, one in afternoon and one in later in the evening, so that आप लोग यदि occupied हैं जिंदगी की भागदौड़ में तो alert हो जाएं
कि अब आप मैजिक सेशन में हैं और अपनी लाइफ में मैजिक को होते हुए देखना चाहते हैं. Okay, so you'll be getting the 2 messages every day for that, right? And हम दोनों की यही इंटेंशन है कि आप जो भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करें अपनी लाइफ में. और यदि उसके लिए हो सकेगा, और यदि आप नहीं कर रहे होगे, तो हो सकता है कि आपके पर्सनल नंबर पे भी मैसेज आए कि आप नहीं कर रहे हो, और हो सकता है किसी दिन कॉल भी आ जाए आपके पास, कम ऑन, आप कर क्यों नहीं रहे हो, राइट? Because this time you have not only investing your time and the energy and what are the effort you're putting, you have put up amount also, and that matters to us. Okay, whatever it is small or big, doesn't matter, but it's a commitment amount you have given, and we really want that you get more than 100 times value out of that. Okay, so this is that, guys. And uske alawa kahin pe bhi aapko koi concern hota hai, I'm there on the WhatsApp group. You have my number. Either you can call me. If I'm not able to pick, I'll respond you on WhatsApp. So it's going to be an amazing journey, and we'll be keep once we start doing it, if there is any concerns come, we'll be keep in communications, and wish you all the best, and have a magical, magnificent journey this March 2021 with none other than Zagzeet Zekedi. Okay, Puran, I would request you to introduce yourself also, because there are some people who are new in this group. So maybe, once you have introduced, then I will introduce myself. Yeah. Sure. So Make it first of make all, it make it short, huh? Yeah. Sure. So guys, hi, my name is Puran Pandey, and I'm based in Delhi. By profession, I'm a consultant for SMEs, a coach, and a budding YouTuber. And I have a privilege to serve for last 15 years, couple of organization in healthcare and in other areas of life. And I live in Delhi, and I have a beautiful, lovely, awesome soulmate. Her name is Kala, and I have a 10-year baby. Baby तो नहीं बोलेंगे, मैं उसे प्यार से baby बोलता हूँ, Christy, but she is a lifeline of both of us. And Jagdeep and me have been connected through one of the community called Miraculous, and I have a passion for making a difference in people's life, and that is why I'm here. So thank you, and it's been really indeed a pleasure to be with you all in this magic program. Yeah. Thank you, Puran. So people who have just joined us in this new journey, which we are starting today. So my name is Jagjeet, and I'm a life coach by profession, and I've just switched my profession, I would say. So I've been with the corporate world for last 35 years, and I've just taken retirement in October and started working as a life coach. And I specifically coach women, and that too single women, and all the problems, issues they face. Like I'm there to help you. And I'm single. I stay in Delhi, and I am I am graduate, and I'm also been at seminar leaders in Landmark worldwide, and that is where I actually realized that making a difference in people's life is my passion. एंड वहां पे इतने लोगों के साथ काम किया, इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में डिफरेंट कॉज किया, तो एक सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट मिला, तो लगा कि यही करना है मुझे लाइफ में. एंड आई थिंक बीइंग अ लाइफ कोच इज द लॉजिकल स्टेप टुवर्ड्स दैट. सो दैट इज a small introduction about myself, and going forward during the sessions, and you may come to know more about me, because I'll be sharing a lot from my life when we were talking about. So let's begin the journey. And I am so happy that we have such lovely people who are really committed to make a difference in their own lives. And they have made this choice of being in this session. So thank you so much. And we are here to support you in your commitment. And we are going to be your accountability partners, both of us. And anytime you need any support, just reach out to us. Yeah. So and we have this ritual bolu ya kya bolu. Every day we ask who would like to read the chapter today. So anybody would like to nominate their name to read it today? Today we have a slightly longer text to cover.
So let's not waste more time and start with it. So anybody wants to nominate their name for reading today, or maybe today Puran can start and tomorrow somebody else can read, whatever anybody has to say. You can just write it in the chat box. पुराण सा स्टार्ट Okay, Bijal. सर Thank you. बहुत दिन के बाद मिले Yeah, so I'll just share the book on the screen. 1 second. Give me a second. Okay, so here we go. So let's begin the journey. Yeah, Puran. Jagjit, can you hear me? I can hear you now. I would request you to switch off your video because बीच-बीच में ना आपका internet problem कर रहा है. So you can just switch off your video and just be on audio. Should I read? Are you inviting me to read the today's chapter? Yes, Puran, because that is the demand of Bijal Shah. Oh, यस सर hi, Bijal. Thank you so much. Okay, great. Perfect. So let's start. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In The Magic, Rhonda Brand reveals life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your day-to-day life, in your everyday life, in fact. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Okay, pause. So this book is written by Rhonda. So बहुत सारे धर्म ग्रंथों में, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो बहुत थोड़े से लोगों को मालूम है और वो उससे फायदा उठाते हैं. बाकी लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता है. अब आप अपने ही धर्म ग्रंथों को देख ले. हमारे धर्म ग्रंथों में खजाने भरे हुए हैं, नॉलेज के खजाने हैं, पर हम में से कितने लोगों के पास वो पहुंचा है, क्योंकि वो कुछ लोगों की धरोहर बन के रह गया है. तो रोंडा ने ऐसी ही एक सीक्रेट को, ऐसी ही एक मैजिक को इस बुक में कन्वर्ट किया है. और आप कहीं भी रहते हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूएसए में हो, चाहे आप कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, अफ्रीका में हो, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, ये सबके ऊपर काम करता है. और ये मैजिक उसने अनकवर किया है इस बुक में हमारे लिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को मैजिकल बना पाए. Yeah, so The Magic by Rhonda Byrne. So I'll just move it forward and we'll start on acknowledgement. Dedication. Yeah. Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. Okay, so हर चीज का ना एक इंटेंशन होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिससे उसको लिखा जाता है या किया जाता है. तो अगर हमने ये सेशन शुरू किया है तो हमारा भी इंटेंशन है, हमारा भी कोई कॉन्टेक्स्ट है. एंड ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट इज डिसाइसिव. आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है, आपको एक्शन वही कॉन्टेक्स्ट देता है. आपके एक्शन हमेशा जो है वो अलाइंड होते हैं आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ. तो हमारा क्या कॉन्टेक्स्ट है, हमारा क्या इंटेंशन है इस जर्नी को शुरू करने का, that each one of you, including me and Puran, हम सबकी जिंदगी में मैजिक आए और हमारी जिंदगी जो है वो अबंडेंस से भर जाए. और उसने भी लिखा है कि उसका भी यही इंटेंशन है कि यू हैव अ लाइफ व्हिच इज फुल ऑफ अबंडेंस.
a new world, for you, which opens and brings joy for your entire existence. सिर्फ लाइफ के लिए नहीं बोला उसने, एग्जिस्टेंस बोला है. तो आपके हर एरिया में, आपकी जिंदगी के जहां जहां भी आप एग्जिस्ट करते हो, आपके उस हर एरिया में मैजिक हो, एक नई दुनिया खुलती चली जाए. सो दैट इज द इंटेंशन ऑफ रोंडा. वैल्यू तो मींस इतनी गहरी बात है मैजिक आ रहा है हमारी जिंदगी में. I would request everybody to please be on mute. Yeah, Puran, you can continue. Okay, अब हम लोग अक्सर जब हम कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं ना, हम लोग हमेशा एक्नॉलेजमेंट्स और ये सब चीजें छोड़ देते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर हमने ये किताब पढ़ी है तो किसकी वजह से ये किताब हमारे हाथों में आई है, उन सबका शुक्राना करना, उन सबका धन्यवाद करना, उन सबके लिए कृतज्ञता देना हमारा फर्ज बनता है. और यही से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं इस जर्नी की, by acknowledging those people who have made this possible for this book to be available to the world. Yeah, Puran, please continue. Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank Okay, you. one second. So, हम कोई भी काम शुरू करते हैं अकेले शुरू करते हैं. अगर आपने कोई अपना बिजनेस शुरू किया है तो आपने अकेले शुरू किया था. तो एक वो गाना है ना, एकला चलो रे, तो आप शुरुआत तो अकेले ही करते हैं. पर कहते हैं ना, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बन जाता है. तो अगर आपने कोई काम शुरू किया, आपने अकेले शुरू किया, फिर लोग जुड़ते चले गए, फिर आपके और एम्प्लॉइज होते चले गए, और आपका वो बिजनेस जो है वो बढ़ता चला गया. तो शुरुआत आपने खुद अकेले की, बट देयर आर पीपल who contributed in your journey. आप जहां भी आज पहुंचे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है. इसी तरह से इस बुक को बनाने में भी बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और उन सबको अपने तरफ से शुक्राना करते हुए, कृतज्ञता देते हुए रोंडा ने ये सब लिखा है. हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू. Thank you. Thank you. And thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me, editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor, Cindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphic and the front cover. To Shamus Hoare, to Carla Thornton at Goza Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with the photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Don Jack, Mark Ona, Mike Gardner, Laurie Sharapov, Corey Johnson, Kai Chi, Peter Bryan, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publisher, Etria Books, and Simon & Schuster, to Carolee Reddy, Judith Kerr, Darlene Delio, Kristen Fan, James Perwin, Kimberly Goldstein, and I Sold Saw. I'm blessed to have such an amazing team of people. Thank you,
thank you, thank you to Angel Martin Valos for his spiritual guidance, love, and wisdom. To my sister Pauline Vernon and my dearest friend and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with my deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truth of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. Okay, so she has actually acknowledged everyone who has contributed in making this book, writing this book. तो ये book जो है ना, this is a combination of science as well as religion. तो सारे दो जो वर्ल्ड के रिलीजन में से चीजें उसने ली हुई हैं और साइंटिफिकली प्रूवन उसको बनाकर उसके बाद इस बुक में लिखा हुआ है, सो दैट यू नो एवरीबडी इज एबल टू रिलेट टू इट. अगर आप किसी भी रिलीजन से हैं तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि जो वो बोल रही है वो सही कह रही है, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप जैनी हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, बट यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट. एंड उसके लिए उसने कितनी रिसर्च की है, उसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कितने लोगों ने उसका उसकी सहायता की है. अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें कितने लोगों ने उसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो उन सब के नाम भी हैं इसमें. अगर आप जो भी कोई अगर आप एक पिक्चर देखने जाते हैं तो आपको सिर्फ वो हीरो हीरोइन एक्टिंग करते हुए दिखते हैं और सब कुछ दिखता है स्क्रीन पे, बट कितने लोगों की उसमें मेहनत जाती है. एक किसी ने वो कहानी कंसीव की, किसी ने स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद डायरेक्शन हुआ, उसके बाद यू नो कास्टिंग हुआ, उसके बाद म्यूजिक, दुनिया भर के लोग उसमें जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं, उसके बाद जाके एक वो पिक्चर बनती है. सो सिमिलरली ये बुक जब बनी है इससे बहुत लोगों का योगदान है और इस एक्नॉलेजमेंट्स में रोंडा ने उन सब का एक्नॉलेजमेंट किया, उन सबको थैंक यू बोला है. Okay, so let's read about the contents. ये जो हम बुक पढ़ने वाले हैं इसमें मोटा मोटा contents क्या हैं? Just quickly go through that. या पूरन. तो contents हैं, do you believe in magic? A great mystery is revealed. Bring the magic into your life. A magical book. Day 1. Okay, pause. So ये ऊपर वाले जो ये 5 वो है ना 4 चैप्टर्स हैं, ये हम आज कंप्लीट करेंगे. तो ये स्लाइटली लॉन्गर है इसलिए हम जरा थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि we try and cover it during the time frame we have given. It may shoot by 10 minutes or something because थोड़ा सा लंबा है ये. Yeah, please continue. Yeah, Puran. Day 1, count your blessings. Day 2, the magic rock. Day 3, magical relationship. Day 4, magical health. Day 5, magic money. Day 6, works like magic. Day 7, the magical way out of negativity. Day 8, the magic ingredient. Day 9, the money magnet. Day 10, magic dust everyone. Day 11, a magic morning. Day 12, magical people who made a difference. Day 13, make all your wishes come true. Day 14, have a magical day. Day 15, magically heal your relationships. Day 16, magic and miracles in health. Day 17, the magic check. Day 18, the magical to-do list. Day 19, magic footsteps. Day 20, heart magic. Day 21, magnificent outcomes. Day 22, before your very eyes. Day 23, the magical air that you breathe. Day 24, the magic wind. Day 25, cue the magic. Day 26, magically transform mistakes into blessings. Day 27, the magic mirror. Day 28, remember the magic.
your magical future. The magic never ends. About Rhonda Byrne, excerpt from The Secret and excerpt from The Power. Okay, now the question comes, do you believe in magic? So I'm asking all of you, do you believe in magic? Just write it in the chat box. Do you believe in magic? Yes. किसको विश्वास है चमत्कारों पे? क्योंकि अगर आप जादू पे विश्वास करते हैं, चमत्कार पे विश्वास करते हैं, तब ही ये बुक आपको कुछ मैजिक दिखाएगी। अगर आप लॉजिकल बंदे हैं और यहाँ आके सिर्फ टेस्टिंग दी वाटर्स कि क्या लिखा है, कैसे काम करता है, देखते हैं कुछ काम करता भी है कि नहीं, you will not find anything. If you believe in magic, you will find the magic. Yeah, please continue, Puran. Okay. Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916 to 1990 writer. Remember, when you were a child and you looked at life in total wonder and awe, life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass. जैसे अभी आप देख रहे हो ना, ऐसे बच्चे करते हैं, देख रहे हो ना स्क्रीन पे. So you were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or the rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth, because it meant the tooth fairy would be coming that night. And you would count down the days to the magical night of the Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it. And he never let you down. Reindeer could fly. They were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personality. Dreams came true and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits. And you believed that life was magical. There is an exquisite feeling many of us had as children, that everything is good, that every day promise more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibility, problems, and difficulty took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as a children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children, so that we can experience that feeling we once had, even if just for a moment. I am here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up the believing in the magic of life. Okay, pause. तो हम सबने बचपन में देखा, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे. कहीं पे भी हमें ओस दिखती थी, हम इतने एक्साइटेड हो जाते, लगता था मोती की तरह चमक रही है. तितलियों के पीछे भागते थे, उनके रंग देख देख के इतने खुश होते थे, कितनी खूबसूरत है, कितने कितने रंग हैं इनके अंदर, कितने कितने डिजाइन हैं. और कहीं हमने वो सब कुछ खो दिया. Responsibilities, stress,
कंपटीशन, इन सब चीजों में ना हम कहीं अपना वो बचपन खो दिया हमने। इसीलिए आज भी जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, अगर हम किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो हम फिर से फ्रेश हो जाते हैं ना। हम अपने बच्चों के साथ बैठना पसंद करते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ तो और भी मजा आता है। क्यों? बिकॉज दैट इज हु वी आर। दिल में आज भी हम वैसे ही हैं, बट आज का दुनिया भर के बोझ जो हमने उठा रखे हैं, उन सब ने उसको कहीं दबा दिया है। और हमारे लिए अभी की जो जिंदगी है वो रियल लगती है, जो परेशानियों से भरी है। और वो जो बचपन की जिंदगी थी, केयर फ्री, खुशियों से भरी, जादू से भरी, वो कहीं खो गई है। और हमारे लिए वो सपना लगती है अब, पर वो सच है। और जो हम अभी जिंदगी जी रहे हैं, दैट इज disillusioned life we are living, and that is what she's trying to say. And this is true as you are. अगर आप अपना हाथ अपने मुंह के सामने रखेंगे, जितना रियल ये हाथ आपको दिखाई दे रहा है ना, इतना रियल है that magic is there, and it is possible to bring that magic into your life. Yeah, please continue. जगजीत, ये बच्चों की तरह जिसने स्क्रीन पे किया हुआ है तो ये हट जाएगा तो चलेगा, अदरवाइज आई एम एंजॉयिंग इट हाँ हाउएवर। हाँ, चलने दो इसको। किसी ने करा है। Somebody has done it. Yeah. You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm. And that's the most thrilling part. ओके, पॉज। तो अभी अगर हम कहें कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैजिक है, हमें थोड़ी पता कि रेनडियर्स फ्लाई करते हैं या टूथ फेरी आती है या सेंटा क्लॉज आएगा, हमें तो पता है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बट आपके सपने, जो आप चीजें चाहते हो, वो आपकी जिंदगी के सामने अचानक प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। अचानक ऐसे लोग आपकी जिंदगी में जुड़ते चले जाएंगे जो आप चाहते हो, उसमें आपकी मदद करते चले जाएंगे। और ये कैसे होगा? आपको नहीं सोचना उसके बारे में। अगर आपने मैजिक द सीक्रेट मूवी कल देखी है, तो आपको पता होगा उसमें वही कहते हैं कि आस्क, बिलीव। हाउ में नहीं जाना है कि वो कैसे आएगा, और वो होगा। आपको सिर्फ उसके ऊपर विश्वास रख के और उसको मानते हुए चलना है। सो क्योंकि ये जो जो मैजिक होता है ना, वो इनविजिबल रेल्म में होता है, वो दिखाई नहीं देता है बट होता है। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा कुछ भी करता है तो सामने आके थोड़ी करता है, कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप में वो हमारे काम सारे पूरे कर देता है, अगर हम विश्वास रखते हैं उस पर। तो उसी तरह से जब जादू की बात हम कर रहे हैं, तो जो हम चाहते हैं वो जादू हमें दिखेगा कैसे? वो जादू हमें ऐसे दिखेगा कि जहां भी आपकी जिंदगी में अंधकार है, अंधकार मीन्स प्रॉब्लम से, अगर आपके पैसे के मामले में आपको कुछ परेशानी है, कुछ अंधकार है वहां पर। आपके रिलेशनशिप में कुछ अंधकार है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, और चिक 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 चलती रहती है सारा टाइम, घर में स्ट्रेस रहता है, ऑफिस में स्ट्रेस रहता है, तो वहाँ अंधकार है ना? बिकॉज वहां पे अंधेरा है, थोड़ा सा अंधेरा है, वो छट नहीं रहा है। तो जहां मैजिक आएगा वहां पे क्या होगा? चमत्कार। कुछ चमकता हुआ सा होता है, उसको बोलते हैं चमत्कार, उसको बोलते हैं जादू। तो वो जब चमत्कार होगा, तो जो चीजें आप चाहते हो अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। एंड दैट इज व्हाट इज मैजिक ऑल अबाउट। और वो कैसे होता है, हमें उसमें जाना ही नहीं है, हमें तो अपने मैजिक से मजा लेना है। हाँ जी, कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक बात है जगजीत। मुझे याद आया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है इस पे ध्यान नहीं देना। जब इलेक्ट्रिसिटी से जो बल्ब जलता है उससे रोशनी होती है, उसको आनंदित करना है। या या ओके, आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? So get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. Great. तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये नहीं कि 10-20 साल पहले या 15 साल पहले जब रोंडा ने ये बुक लिखी तभी ये कुछ हिस्ट्री पता चली हमें। ये तो बहुत बरसों पुरानी चीजें हैं जो हमसे छुपी हुई थी, जिसको उसने उजागर किया है हमारे लिए।
So अभी ये journey is about to begin. ये journey शुरू हुई जितने भी साल पहले, पर हमारी journey तो आज से शुरू हो रही है. So fasten your seat belts and ready to take off. Zoo! Yes. A great mystery is revealed. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scripture, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever doesn't have, even what he has will be taken away from him. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for the centuries is one hidden word: gratitude. Okay, so ये book ना बहुत riddles में लिखी हुई है, और इसमें सबसे पहली riddle ये है, और इस riddle को आपने हमेशा ही याद रखना है going forward, क्योंकि ये बार-बार इस book में हर एक बहुत सारे chapters में repeat होगा. So I really want you to be very focused on it. May I request everybody else to be on mute, please? Rahul, can you be on mute, please? Hello. Puran, can you mute everybody else, please? Okay, so if you मैम मैं म्यूट पे हूँ, कोई तो दूसरा था. Okay, thanks. Sorry for that. So anybody else who is on unmute, please mute yourself, because it is distracts, it will, flow of thought toot jata hai. So please be responsible. We all are grown-up people. So this is my I think all are on mute except strategic orator. So Sorry. no issue, strategic orator. Please. Okay. So what I was creating was that ये जितनी भी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, और ये वाला जो रिडल है ना, इसको रिडल को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये रिडल बार बार रिपीट होगा इस बुक में. और ये रिडल क्या कह रहा है कि जिसके पास ऑलरेडी है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा. तो बड़ा अनजस्ट, बड़ा अनफेयर सा लगता है. हाउ कैन दिस बी? तब यूनिवर्स ऐसे कैसे कर सकता है कि जो रिच है उसको और पैसा देता चला जाएगा, और जो गरीब है उसको और गरीब करता जा जाएगा. और कहीं ना हमें ये लगता भी ऐसा होता है. बट देयर इज वन थिंग व्हिच इज मिसिंग. वो रिडल क्या है, वो क्या वर्ड है कि जो मिसिंग है, जिसकी वजह से हमें ये ऐसे दिखाई दे रहा है, और वो वर्ड है ग्रैटिट्यूड. एंड दैट इज what this book is all about. Yeah, so let's read it again with gratitude. Haji. Okay. So whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever doesn't have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Okay, तो रिडल में क्या आ गया, जब हमने ग्रेटिट्यूड ऐड कर दिया उसमें, तो अब ये क्लियर होता है कि जिसके पास ग्रेटिट्यूड है, जिसके पास शुक्राना है, जिसके पास कृतज्ञता है, उसके पास और आता जाएगा. और जो कृतज्ञता नहीं देता है, जो धन्यवाद नहीं देता है, उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा. तो अब ये थोड़ा सा सेंस बना रहा है हमारे लिए. तो गोइंग फॉरवर्ड वी विल अंडरस्टैंड इट मोर. या प्लीज कंटिन्यू. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words.
If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. It says, and remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religious you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scripture and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. ओके तो आप किसी भी रिलीजन से हो तो अगर आप देखेंगे तो सारे रिलीजियस बुक्स में एक ही चीजें लिखी हुई है, एक जैसी ही चीजें लिखी हुई हैं, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। तो जो इसमें जो रिडल में लिखा है वही कुरान में भी लिखा है कि अगर आप जिस चीज के लिए थैंकफुल होगे उसके लिए आपको और मिलेगा, और अगर आप थैंकफुल नहीं होगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो taking away is also like a punishment. So this applies to everywhere and everyone, whether you are atheist, whether you believe in Jainism or you believe in Sikhism, you believe in Christianity, आप जिस भी धर्म को मानते हैं ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। या It's a universal law. पूरन थोड़ा सा पीछे होके बोलोगे, आपकी ना मफल आ रही है बहुत। ओके जी, हाँ एक सेकंड, बेटर है। हाँ बेटर। It's a universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of the material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. ओके पॉज। तो आप में से जिसने सीक्रेट देखी है यू विल नो कि उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वी ऑल आर एनर्जी, और हमारे एनर्जी फील्ड से कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है वो एमिनेट होती हैं। जैसे हमारे हार्ट की अगर आपने ईसीजी कराते हैं तो उसमें वो ऊपर नीचे लाइंस जाती हैं, ऐसे ही हम जब ब्रेन का ईईजी कराते हैं उसमें भी वो ऐसे ही जाती है। सो दोज आर द फ्रीक्वेंसीज। तो जो भी हम थॉट सोचते हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो एक तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो यूनिवर्स में जाती है। And then what happens? Law of attraction brings the similar matching frequency things back into our life. That is what law of attraction says. Like attracts like. So to understand that more in detail, I would be requesting all of you to watch that movie today if you have not already watched it. And that is your assignment for today, by the way. Yeah, please continue. Okay, so if you think I don't like my job, I have not got enough money, I can't find my perfect partner, or I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I didn't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is a trouble, then you must attract more of those experiences. But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as a metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have,
the more abundance you magnetize. It is a universal law. ओके तो आप जैसी भी चीजें सोचते हैं, सोचने की बात हो रही है, इट्स टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो जो भी आप सोचते हैं, अगर आप सोचते हो कि मेरा तो आई डोंट लाइक माय जॉब, मेरा तो बॉस ही बहुत बकवास है, और मेरे कोलीग्स तो मतलब बैक बाइटिंग करते हैं, बस अपने नंबर बनाने में लगे रहते हैं, या मेरा सीनियर ऐसा है, या मेरी वाइफ ऐसी है, या मेरी मदर इन लॉ ऐसी है। तो जहां भी आप जैसा सोच रहे हैं ना, आप वैसी ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं, इट्स लाइक अ मैग्नेट। तो जैसे मैग्नेट के पास लोहा खींचता हुआ चला जाता है ना चुंबक से, इस तरह से जब आप ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो वैसी ही चीजें, वैसी ही आपको और सर्कमस्टांसेस, वैसी ही इवेंट्स आपकी लाइफ में होते जाते हैं, जिसके लिए आप और ग्रेटफुल होते चले जाते हो। एंड दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ। और ये सब जगह पे हर एक इंसान के ऊपर हर वक्त काम कर रहा है, आप जाने या ना जाने। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। You will have heard saying like, whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental law of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and an equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. ओके सो हमने बचपन से सुना है ये सब ना, कि यू नो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, जैसा जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। सो दैट इज व्हाट दिस बुक इज आल्सो टॉकिंग अबाउट। दैट इज व्हाट आइजैक न्यूटन आल्सो सेड ना, उसका लॉ भी यही कहता है कि यू नो एवरी एक्शन हैज अ यू नो ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। सो वही होता है, जब भी आप कुछ करते हो, जस्ट फीलिंग के साथ अगर आप वो काम कर रहे हो, सेम फीलिंग की चीजें आपके पास वापस मुड़ के आती है। दैट इज व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ। ओके सो पूरन मैं थोड़ा सा बोलूंगी, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे बिकॉज वी हैव लॉट टू कवर। जी बिल्कुल, your wish is my command. Let's go ahead. The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recording of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continent, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. And Krishna said, whatever he's offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you, before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous tradition. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life,
and strength. Give thanks for your food and the joy of living. And if you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Tecumenes 1716 A to 1813, Shawnee Native American leader. Absolutely fascinating, amazing. ओके सो अगर आप अभी देखेंगे तो ये लिखा है कि हर एक धर्म में हर एक ने यही बोला है कि जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो तो आपको उसके लिए अबंडेंस मिलता है। और ग्रेटिट्यूड देना क्यों है? जब अगर आज की जिंदगी हम देखें, भागदौड़ की जिंदगी में इतना स्ट्रेस, हमें सिर्फ ना कमियां दिखती हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और इसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी प्रमोशन क्यों होगी, मुझे क्यों नहीं, मेरी क्यों नहीं हुई, इसके पास बड़ा घर क्यों है, मेरे पास बड़ा घर कब आएगा, उसकी बीवी इतनी सुंदर क्यों है, मेरे को ऐसी बीवी क्यों मिली। तो हम लोग हमेशा ही अपने पास जो नहीं है, हम उसके लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज स्ट्रेस। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके उसके बराबरी में जो रियलिटी है, अगर वो मैच नहीं कर रही होती तो आपको स्ट्रेस देता है। बट ये स्ट्रेस हमने पाला है अपने आप, क्योंकि हमें तो इतना कुछ मिला है। तो अगर आप सुबह उठते ही उस दिन के लिए थैंक यू बोलते हैं, सूरज के लिए थैंक यू बोलते हैं, हवा के लिए थैंक यू बोलते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए आप थैंक यू बोलते हो, तो इतना आपको जॉय, इतना कुछ जिंदगी में आपको खुशियों से भर जाएगी आपकी जिंदगी। और अगर आप उठ रहे हो और आपके पूरे दिन में आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मैं किस चीज के लिए थैंक यू बोलूं, मेरे पास ऐसा क्या है, मुझे क्या दिया है भगवान ने, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिया, मेरे तो रिश्तों की बुरी हालत है, इतना सारा पैसा कर्जा लोग बैंक का देना है मुझे, जब देखो लोग तकाजे करते रहते हैं, है, और मेरे पास तो नई गाड़ी भी नहीं है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स वी ऑलवेज फील दैट हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए हम थैंक यू बोले। बट अगर आप देखो तो हमारे पास इतना कुछ है उस परमात्मा का, उस यूनिवर्स का थैंक यू करने के लिए। तो इफ यू फील दैट यू हैव नथिंग जिसके लिए आप थैंक यू दे सके, तो द फॉल्ट लाइज विद यू। या कंटिन्यू प्लीज। Okay. History has laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop Blackie, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein, scientific discovery changed the way we see the universe. And when asked about the monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. It is any wonder that so many of life mysteries. Is it any wonder? Is it? Thank you, Jagjeet. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulder of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to the science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yes. So the only key is practice it. बहुत लोगों को, जितने भी महान लोगों के नाम इसमें भी दिए गए हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो लीडर्स हैं, जो भी हैं, जिनके भी नाम लिए गए हैं इस बुक में, उन सबको इस सीक्रेट के बारे में मालूम था, इस ग्रेटिट्यूड के बारे में मालूम था, और उन्होंने क्या किया, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया। तो अभी भी बहुत सारे लोगों से ये बात छुपी हुई है, और अगर पता भी चल जाती है तो हम लोग अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तो हम वो अबंडेंस अपनी लाइफ में वो नहीं ला सकते हैं, वैसी जिंदगी हम नहीं पा सकते हैं जैसी हम जीना चाहते हैं। एंड वही आज तक हम करते आए हैं। तो आज हमारे पास ये जर्नी हमने जो शुरू करी है, इसमें हमें धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि हम उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ताकि हम अपने लाइफ के हर एरिया को, जहां पर भी हल्का सा अंधकार है, अंधेरा है, वहां पे चमत्कार कैसे करना, उसको चमकाना कैसे है। हाँ जी, प्लीज कम कंटिन्यू। Excuse me. या Can I leave? I have a class at 8:30. Yeah, sure. You can listen to the recording. I'll be sharing it in the group. Thank you. Thank you very much. You're Thanks a welcome. lot. You're Thank welcome. you. Yeah. My discovery, my story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude. And what happens is ignorant of gratitude, and what happens when you made a gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the word thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was a pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit for every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day. And I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I was not living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than the more problem would appear. Okay, But pause. I want all of you to look into your life right now. How many of you can identify with this? हम सबकी लाइफ में ऐसा ही कुछ ना कुछ चल रहा है, जो उसकी लाइफ में चल रहा था before she found this secret, before she found this secret of gratitude. So अगर उसकी लाइफ बदल सकती है, तो हमारी क्यों नहीं? हम क्यों नहीं बदल सकते? हम भी बदल सकते हैं by practicing the same secret of gratitude. Yeah, please continue. but then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationship would, in my relationship, work, and health disappear. And instead of daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy had in my 20s. My relationship became much more meaningful. And I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissful, happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Okay, so she's just
shared how her life was before the magic, and how she transformed her life, and what all she caused in her life due to that. So now let's bring that magic into your life. So let's bring the magic into your life. No matter who you are, no matter where you are, and no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situation who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles takes place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationship transform into magnificent relationship. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationship into a joyful and a meaningful relationship, no matter what state they are in now. Gratitude. Purun, are you there? I think he got disconnected. So can anybody else start reading from here? Okay, Well, got it. okay, Okay, it's there on the screen. okay. Can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationship. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any area that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. It's a Okay, simple so fact. pause. So I want all of you to look into your life. I mean, do this during the day today and find out where all you have the kind of life you want. आपको पैसे में कुछ कमी है कि नहीं है, अगर abundance है तो that means वहां पे आपने gratitude किया है. अगर आपका कोई relationship बहुत अच्छा है, that means वहां पे gratitude है, बाकी जगह पर नहीं है. तो आज आप अपनी life को check कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि आपने gratitude दिया हुआ है. जो जो चीजें काम कर रही हैं, that means you have paid gratitude in those areas, and wherever there is a challenge, there is a problem, that means there's a lack of gratitude. Yeah. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationship, more joy, more money, and the achievement of your job, career, or business.
To receive, you have to given. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of ungratefulness is that when you were not grateful, we are talking we are talking things in our life for granted. Taking things. Sorry, we are taking, ये बच्चों की लाइन मेरे No, मेरे that's को okay. डिस्टर्ब कर रही है. Uh, We are taking things in our life for granted, and when we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that the like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever doesn't have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. The magic formula. Okay, so I want everybody to sit on the edge of your chair. Whatever you're doing, please pay full attention to this, because this is the magical formula which you need to understand and start practicing. Yeah. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Ibn Khalduddin al-Muqaddama, 1332 to 1406, scholar and a statesman. Ancient myth and legend say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And the first you must say the magic word, thank you. I cannot begin to tell you how important the word thank you and for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life you of your dreams. Okay, so this is very important. Thank you is the bridge. सर थैंक यू को अपनी जिंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि ये थैंक यू ही वो ब्रिज है जहां आप आज हैं वहां से आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचाने का. या और वो करना कैसे है, लेट्स सी. The magic formula. Number 1, deliberately think and say the magic word thank you. Number 2, the more you deliberately think and say the magic word thank you, the more gratitude you feel. Number 3, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. ओके, सो ये फॉर्मूला क्या है? डेलिबरेटली. आपको डेलिबरेटली सोचना है और बोलना है थैंक यू. अभी एक आएगा नहीं, अचानक तो आएगा नहीं, आदत नहीं है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी है. एंड अगर वो फीलिंग नहीं आती, वो कह रहे हैं ना, डेलिबरेटली थिंक एंड से, पहले आपको सिर्फ सोचना है और बोलना है, उसके बाद फीलिंग्स आने शुरू होती हैं, क्योंकि पहली बार में फीलिंग्स आएंगी नहीं, क्योंकि आपको थैंक यू सिर्फ ऐसे ही थैंक यू फेंकने की आदत है. थैंक यू को फील करके बोलने की तो आदत ही नहीं है हमें. बट जब आप डेलिबरेटली थैंक यू बोलना शुरू करोगे तो वो एक स्टेप आप लोगे. जब डेलिबरेटली थिंक कर रहे हो और बोल रहे हो, देन यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. एंड द सेकंड थिंग इज डेलिबरेटली थिंकिंग, स्पीकिंग एंड फीलिंग इट. और जो ये जो जर्नी है हमारी, और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, ये तो फीलिंग्स पे ही काम करता है. बट फेक इट टिल यू मेक इट. जब तक वो फीलिंग्स नहीं आती हैं तो सिर्फ सोचिए और बोलिए. धीरे धीरे फीलिंग्स अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी, और जब वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, दैट इज व्हेन द मैजिक स्टार्ट्स. दैट इज व्हेन द अबंडेंस विल फ्लो इन योर लाइफ. या प्लीज कंटिन्यू. Point number 3, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. So gratitude is a feeling. So the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because
It's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feelings of gratitude, the the results in your life will expand to be equal to your feelings. The truer the feeling, the more sincere grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in a way that you can hardly imagine. ओके तो जितना आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे आपकी जिंदगी उतनी ही बदलती जाएगी। अब ये कह रहा है कि जो हम लॉ की बात भी कर रहे हैं कि जो आप दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। बट अगर आप उसमें फीलिंग्स को भर के देते हो, आपकी फीलिंग्स, अगर आपने किसी को 10 रुपए दिए तो कहते हैं ना जो आप दोगे वापस घूम के आपके पास आता है। यू स्टार्टिंग अ सर्कल, एक सर्कल शुरू होता है। जब आप कुछ देते हो तो वो वापस आपके पास लौट के आता है। आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट किया तो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट जरूर देगा उस दिन। और अगर आपने किसी को बहुत गुस्सा किया, लड़ाई करी किसी के साथ, तो वो इंसान हो सकता है आपसे कुछ ना कहे, पर आपको कहीं ना कहीं से वो चीज वापस मिलती है। सो सिमिलरली जब आप किसी को कुछ दे रहे हो, अगर आप किसी के साथ कुछ ग्रेटिट्यूड किसी को दे रहे हो और आप बहुत फीलिंग्स के साथ दे रहे हो, तो आप कितनी फीलिंग्स के साथ दे रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप किसी को 10 रुपए दिए तो जरूरी नहीं है आपके पास 10 रुपए ही वापस आएंगे। अगर आपने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ किसी को दिया है, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ किसी को दिया है, तो हो सकता है वो 100,000 lakhs क्या बन के आएगा मुझे नहीं मालूम। दैट यूनिवर्स ओनली नोज एंड योर डेप्थ ऑफ योर फीलिंग नोज। जितने डीपली आप फील करके दोगे ग्रेटिट्यूड उतनी ही क्वांटिटी में आपकी लाइफ में आएगा। हाँ जी, द मैजिक, अ मैजिक बुक। As a magic book, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation, it is not utter words, but to live by them. Yeah. John F. Kennedy, 1917 to 1963, 35th President of the United States. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude magical power to revolutionize your health, money, job, and relationship, and to make your smallest desire and your biggest dream come true. You will learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. You will be captivated while you read this life-changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate yourself and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. Okay, this book is designed like that you start practicing this every day और धीरे धीरे वो आपके नए न्यूरॉन पैटर्न्स क्रिएट करेगा और it's basically a habit forming kind of a thing. जब आप इसको रेगुलरली एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको अपनी लाइफ में सस्टेन कर पाएंगे। एक होता है अटेन करना, फिर मेंटेन करना, फिर सस्टेन करना। अभी हम जर्नी शुरू करें, वी जस्ट अटेनिंग इट, then we'll have to start during this 28 days we'll have to maintain it, and thereafter you have to sustain it. Yeah, please continue. Within each magical practice. No, the practices are Okay.
The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit, a new way of life. Practicing gratitude is a concentrated effort over consecutive days. Guarantees that you will see the magic takes place in your life and fast. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in a tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past, because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. The last 6 practice takes you up to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, resolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. You don't need to clear your calendar because each of the practice has been specifically created to fit into your everyday life. Whether it's a work days, weekend, holiday, or a vacation, gratitude is portable. You take it with you wherever you go. And then wherever you go, the magic happens. If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practice again from there. I'm sorry. Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake. And I will tell you when to do this. You might want to read the next days to practice every night before you go to sleep. In order to be prepared, if you do, make sure to reread the practice again in the morning. If you don't want to follow the 28 magical practices consecutively, you can also use them in other way. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life that you want to change or improve, and you could do that practice 3 days in a row or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or 2 practice a week. The only difference being that it will take you longer to see the changes in your life. Okay, so the author is explaining how this book has been designed. So 28 days को उन्होंने 3 भाग में divide किया है. पहले 12 दिन there's going to be practices which is going to be for the things we have received in the past और जो हमारे पास आज है, present में है. और अगले 10 दिन में जो हमारे dreams and desires हैं, जो हमारे सपने हैं, उसके ऊपर है. और लास्ट के जो है वो 8 days में आप अच्छी तरह से उसको सैचुरेट कर लेंगे अपनी लाइफ में. मतलब अपना जैसे होता है ना, अपना डीएनए बना लेंगे उसको. और उसके बाद उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे लोगों को हेल्प करनी है, वो आप you can start doing it, and this only happens when you practice it continuously every day और बिना मिस किए हुए. और अगर आप एक दिन मिस करते हैं तो आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा to keep the momentum alive, क्योंकि अगर मोमेंटम आपने खो दिया तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है. वो जैसे वो बोल रहे हैं ना कि आप किसी एक चीज पे काम करना चाहो तो कर सकते हो. आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. आई वांट everyone to practice this 28 days
consecutively so that you build that momentum and you become that magnet which attracts your dreams. Yeah, please continue. 1 second, I'll just put the page. Okay. After the 28 days. So let's not read this because this is not relevant to us right now. So what are your dreams? This is the most important thing, and this is going to be your assignment also for today. So let's quickly go through this, and we may exceed 5-10 minutes, and I hope you all are okay with that, because this is very important, because the book is based, this whole journey is going to be based on your dreams. So let's just quickly go through this. What are your dreams? Many of the magical practice are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or a pen and a paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every details of what you want to be, do, or have in your life, in your relationship, career, finance, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like. But remember, your job is simply to list what you want, not how you're going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fee, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down the details of the country you want to visit, how long you want to travel for, and what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristic you want that person to have. If you want improved relationship, write down the relationship you want to improve and what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or a body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something such as a passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or a business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide into category of health and body, career and work, money, relationship, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and a thrilling adventure you have ever been on.
Yeah, so thank you so much, Pooran, for reading it so awesomely for everybody. And so this is very important that you start writing your dreams. This is your assignment for today. So you have two assignments today. One, you have to watch The Secret movie. I have already shared it in the group. हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. आपको जिस भाषा में वो बेटर लगे, आप उसको जरूर देखिएगा. दूसरा, आज आपने अपने ड्रीम्स लिखने हैं. So ये ड्रीम्स क्यों लिखने हैं? क्योंकि हम इस जर्नी में आए क्यों हैं? अगर हमने आज से ये जर्नी शुरू की है तो किस लिए की है? क्योंकि हम चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर तरह की जिंदगी जो अभी हमारे पास नहीं है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो रिश्तों के मामले में हो, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है हमारी लाइफ का. जिस तरह की जिंदगी हम चाहते हैं उसके लिए ही हम इस जर्नी में आए हैं. तो इस जर्नी में आने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है, अपने ड्रीम्स लिखने हैं, अपनी डिजायर्स लिखनी है. और आपने आज अपने लिए टाइम निकालना है और अपनी पूरी लिस्ट बनानी है कि आपको क्या क्या चाहिए जिंदगी में, आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं जो आप चाहते हो कि मुझे ये मिल जाए जिंदगी में. और उसको आप आप डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में डाल सकते हो. उसको डिफरेंट उसमें डिवाइड करके, हेल्थ से रिलेटेड क्या चाहिए, पैसे से रिलेटेड क्या चाहिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या चाहिए, हो सकता है कोई गाड़ी चाहिए हो. पर जब भी आप इसको लिखें तो आपने इसको बड़ी सटीकता से लिखना है. अब ये सटीकता से कैसे लिखना है? बी वेरी स्पेसिफिक. आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाने के लिए ऑर्डर देने लगते हैं, तो आप ये तो नहीं बोलते हैं, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ. तो वो पूछेगा ना आपको क्या खाना है, तो आपने बोला अच्छा कुछ भी वेजिटेरियन ले आओ. अब माना आपने वेजिटेरियन खाना मांगा, आपकी इच्छा थी पालक पनीर खाने की, और वो लेके आ गया शाही दिस थिंग व्हाट डू यू कॉल इट, शाही पनीर लेके आ गया या कढ़ाई पनीर लेके आया. तो नेचुरली आपकी इच्छा वो खाने की नहीं है, बट आपने कहा मुझे पनीर की कोई अच्छी सब्जी वेजिटेरियन खाना ला दो. उसको लगा वेजिटेरियन खाने में तो शाही पनीर होता है, मखनी दाल होती है और नान होता है, बस यही लेके आ जाएगा वो आपके लिए. बट की मेन्यू कार्ड में बहुत कुछ था, आपने देखा नहीं उसको, और आपने जो चाहिए था आपने अपने मन से वो मांगा नहीं, तो वही मिलेगा जो उसका मन करेगा वो ले आएगा. सो सिमिलरली आपको जो चाहिए, जब तक आप उसको सटीकता से, क्लियरली, स्पेसिफिकली नहीं लिखोगे, तो यूनिवर्स को क्या पता कि आपको क्या देना है. आपने बोल दिया कि भाई मुझे तो अच्छी सी गाड़ी दे दे, अब उसने आपको दे दी गाड़ी इनोवा, आपको चाहिए थी ऑडी. तो मिसमैच हो गया ना, और आप लगे यार क्या है, मुझे तो चाहता हूँ मिलता ही नहीं है. आपने मांगा ही कहाँ, आपको तो मांगना ही नहीं आया. तो आपने बड़ी स्पेसिफिकली लिखना है कि आपके सपने क्या है. चाहे वो आपके अपने लिए, आप हो सकता है आपने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजना है, आपने अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए भेजना है, तो ऑक्सफोर्ड भेजने के लिए आपका कितना खर्चा लगेगा. सो यू हैव टू एक्चुअली आइडेंटिफाई ऑल दैट. कॉलेज कौन सा है, कॉलेज में कितना खर्चा आएगा, ट्रैवल का कितना खर्चा आएगा, उसका वहां रहने का खर्चा कितना आएगा, पढ़ाई का कितना खर्चा आएगा. सो यू हैव टू एक्चुअली वर्क आउट एवरीथिंग एंड देन राइट मुझे इतना पैसा चाहिए अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, सो दैट यूनिवर्स नोज इट एग्जैक्टली तुम्हें कितना पैसा चाहिए. सिमिलरली अगर आपको घर चाहिए, तो आपको घर कहाँ चाहिए, दिल्ली में चाहिए, बैंगलोर में चाहिए, पुणे में चाहिए, कहाँ चाहिए. अगर आपको दिल्ली में चाहिए तो दिल्ली में कौन से एरिया में चाहिए, नॉर्थ दिल्ली में चाहिए, साउथ दिल्ली में चाहिए, ईस्ट दिल्ली में चाहिए, कहाँ चाहिए, या गुड़गांव में चाहिए या नोएडा में चाहिए. ओके, अगर आपको नोएडा में चाहिए तो आपको हाई राइज चाहिए या आपको बंगलो चाहिए. अगर बंगलो चाहिए तो कितने कितने गज का चाहिए और कौन से एरिया में चाहिए. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. और उसमें कितने कमरे चाहिए आपको, डुप्लेक्स चाहिए, सिंगल स्टोरी चाहिए, और अगर आपको हाई राइज में लेना है तो आपको कौन से फ्लोर पे चाहिए, कितने बेडरूम का रूम मकान चाहिए. तो यू हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए. तो सिमिलरली आपको गाड़ी लेनी है, तो मान लो अगर मुझे मर्सिडीज लेनी है, तो मुझे मर्सिडीज का कौन सा वाला वेरिएंट लेना, मुझे कौन सा वाला उसका मॉडल लेना, मुझे एस क्लास लेना. ओके, एस क्लास में कौन सा वाला वेरिएंट लेना, ओके मुझे ये वाला वेरिएंट लेना है. और मुझे कौन सा कलर चाहिए, मुझे ये वाला कलर चाहिए. मुझे अपहोल्स्ट्री का कलर क्या चाहिए, मुझे अपहोल्स्ट्री का कलर ये चाहिए. तो मैं उसमें जब बैठूंगी तो मुझे कैसा फील हो रहा होगा, you start imagining all that and just write it down, each and every specific thing you want in that. तो अपनी ये लिस्ट बनाई, आज तक नहीं बनाई, आज बनाइए. अपनी जिंदगी में जो चाहिए,
आप किसी भी एज में है, अगर मैं आज 60 पे हूँ तो मुझे आज भी बहुत सारी चीजें चाहिए, मुझे आज भी ट्रैवल करना है, मुझे आज भी ऑस्ट्रेलिया देखना है, मुझे आज भी कनाडा जाना है, मुझे आज भी मॉलदीव जाना है। तो मेरे भी सपने हैं, मेरे भी डिजायर्स हैं। ऐसे आप अगर आप ये सोचो यार मेरी तो जिंदगी बीत गई, अब क्या सपने हैं, हर एक के होते हैं, अंदर छुपे हुए, बाहर निकालना है उनको। राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और आज से आपने एक नई नोटबुक या कोई रजिस्टर शुरू करना है। मैं एक बड़ा सा रजिस्टर रखती हूँ अपने पास, आई ऑलवेज कीप अ रजिस्टर लाइक दिस, जिसमें मैं अपनी रोज की असाइनमेंट्स करती हूँ, बिकॉज आपको असाइनमेंट्स भी रोज करने हैं। एंड even while sitting in the session, if you want to note down something, you can do that also, because बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम यहाँ पर बोलते हैं जो बुक में नहीं लिखी होती हैं, तो उसमें आपको कुछ लगता है जो आपकी जिंदगी में काम आ सकता है, you can write it down. And today start that notebook with writing your dreams. जितने हैं लिखते जाओ, उसके बाद उसमें से आपने 10 ड्रीम्स, दर्शन जी जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, सो उसमें से जो 10 टॉप ड्रीम्स हैं उनको अलग से आप नंबर करके अलग रख लें, और उसमें से टॉप 3 जो आपको अर्जेंटली चाहिए, जो आपके लिए जैसे होता है ना कि यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए और अभी चाहिए, वो 3 ड्रीम्स जो है ना उनको टॉप पे लिखिएगा। ड्यूरिंग दिस जर्नी वी विल बी वर्किंग ऑन दोज 3 ड्रीम्स ऑफ योर्स to get them fulfilled or bring them closer to them. और ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप ग्रेटिट्यूड कितना प्रैक्टिस करते हैं। या सो I think Puran, you want to say something, and Darshan ji wanted to say something. Hanji Darshan ji, you can unmute yourself and speak. Darshan ji had raised his hand, so do you want to say anything, Darshan ji? Okay, so Okay. Puran, you wanted to say something. Yeah, so thank you so much, Jagjit. ये अलग जो जगह रखने के लिए मैजिक की, and I want to sincerely want to say thanks to each one of you here. Anjali Jhalaria, I'm thinking you from Mumbai, Anji, our Prem Geet from Noida, Atul Sen, Bhagwan Das ji, Bijal, our powerhouse from the first program, right? Darshan Singh ji with a ever big green smile, Deepak, Chandra, Saroj, Mananya, Meenu, Punita, Rahul, Ranjan ji, Ranjit, Suma and Sushil. Thank you so much. And so we look forward as we'll be starting from the Magic Implemented Score also. You can reach out to both of us, or you can even directly reach out to me in case of any concern. And thank you so much. Let's begin this magical journey. Okay, so today's assignment I've already shared. I will share it in the group also. So you have to watch The Secret movie and you have to write your dreams. उसमें से 10 ड्रीम्स अलग से लिख लेना जो टॉप के 10 है, उस टॉप में से 3 जिसके ऊपर आपको इस पूरी जर्नी में काम करना है उनको हाईलाइट करके अलग से लिख लीजिएगा. So that is your assignment for today. And so let's do the gratitude prayer and before we sign off. So please fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, so thank you everybody and have a wonderful day. And we will meet tomorrow at 6:20 on Zoom. And please do your assignment, and Puran will be sharing the MIS form. And please fill up that form and submit it before 10 o'clock today so that we can start this journey. Anybody wants to say anything? Thank you very much all. Thank Thank you you so very much. much for making us live magic in our life. Thank you. Jagjit ma'am, I have a question. Yeah, please. Thank you for the reading, Puranji. And thank you, Jagjit, for starting this. My question is that will our usual timing be this 6:30 to 8? No, it's going to be 6:30 to 7:30 only, because whenever the chapter is slightly longer, we may, extend it by another 15-20 minutes. But up to 8 o'clock is very rare. Okay. We just kept it as a buffer, so that you. आज वो फर्स्ट डे है ना. Yeah, Yeah, I figured.
yeah, today because we had a lot to cover, so that is Thank you. why yeah, we have taken that much time. Yeah, so thank you so much, Thank and you. you're welcome, and have a wonderful day, all of you, and see you tomorrow. Bye bye. Thank you, Bye. everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.